Assalamu alaikum students. Today we are going to continue with the same topic, The Solitary Reaper by William Wordsworth. Today I will do the critical analysis of the poem. The solitary reaper has been presented here as a part of nature, like a flower, a tree or a bird. The sad song she is singing thrills the poet and awakens in his mind romantic associations. He is carried away in the imagination, on the one hand to the Arabian deserts, where in some oases the song of the nightingale cheers the hearts of the travellers, taking rest after a hard journey; on the other hand, to the Hebrides island, where the calm and quiet atmosphere is sweetly broken by the song of cuckoo. Thus, through the great power of imagination, Wordsworth has made an ordinary girl an extraordinary. As Wordsworth is a poet of nature, so in the poem he is at his best. Here, the solitary reaper is a reference to that girl who was working alone in the field. And in the poem, she is presented as a part of a nature, like you can consider the flower as a nature, a tree, or a bird as a part of a nature. Here, this girl was also as presented as a part of the nature and not as an individual or a lone girl, or and a separate identity is not given. She is considered as a part of the whole environment, just like the tree or bird or a flower. The sad song she is singing thrills the poet and awakens in his mind romantic associations. As I told you that William Wordsworth was the leader or the founder of the Romanticism in his times. So here the romantic associations means that it actually triggered his imagination. The song actually took him to the heights of the imagination, where he compared the voice quality or the sound or the song of that girl with the two birds which are very beautiful or have the very beautiful voice which is known in the world. That means that the nightingale and the cuckoo are the two birds which are time and again appreciated by the poets just because of their beautiful voice. So here William Wordsworth was so much impressed by the voice or the song of that girl that he was taken to the heights of his imagination, and he compares her song with the nightingale, which when sings in the Arabian desert, it cheers the travelers and soothe the hearts of the travelers when they are having the hard journey and they're taking rest at oasis. And similarly, the cuckoo bird breaks the silence with the excited and the thrilling voice in the environment. So here the cuckoo's reference is also given to the quality of that girl's song and voice. And then we get the comparison, and then we get the appreciation of that young girl's song with the William Wordsworth reference to the two birds. It's the power of imagination that actually brings out that ordinary situation, that ordinary girl, into an extraordinary description. Or you can say that he has turned an ordinary girl activity and her song into extraordinary. And since the Wordsworth is the poet of nature, so this poem in itself is the masterpiece of his work, because it is all about the nature and the appreciation of it. So here यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सॉलिटरी रीपर यानी कि वो जो लड़की अकेले काम कर रही थी, उसको इस पोएम में एक ऐसी शख्सियत का पॉइंट आउट किया है कि वो उस नेचर यानी उस माहौल में एक उसका हिस्सा थी, ना कि वो कोई एक अलग इंडिविजुअल या अलग पर्सनैलिटी रखने वाली और हट के कोई एटमॉस्फेयर से हट के या नेचर से हट के वो मुतासर नहीं कर रही थी, बल्कि वो ऐसा लग रहा था कि वो उस वक्त उस माहौल में वो उसका हिस्सा है। और यही चीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। जैसे कि एक फूल और पौधे और एक चरण यानी कि चिड़िया वगैरह, ये सब कुछ नेचर का हिस्सा हम समझते हैं, इसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ भी इंसान और उसकी एक्टिविटीज़ को नेचर का हिस्सा समझते हैं ज़्यादातर। तो उनकी पोइट्री में हमें ये बार बार चीज़ और थीम नज़र आती है।
अब वो ये कहते हैं कि यहाँ के उसकी आवाज़, यानी उसकी जो सैड सॉन्ग था, गाना था, वो पोएट को अपनी इमेजिनेशन की हाइट्स तक ले जाता है। यानी कि उसकी आवाज़ और सॉन्ग की क्वालिटी ऐसी थी कि वो उसको विलियम वर्ड्सवर्थ अपने सोच में डूब जाते हैं और उसकी आवाज़ को अप्रिशिएट, यानी कि तारीफ़ करने के लिए उनके जहन में सिर्फ दो बर्ड्स का ख़्याल आता है। एक तो नाइटिंगेल जो अरेबियन डेजर्ट्स की बर्ड है, वहाँ पे जब लोग रुकते हैं मुसाफिर, तो ये शाम को जो है ये इस बर्ड की आवाज़ आती है जो बहुत ही मीठी है और जो दिल में उतर जाती है और बहुत सुकून देती है। तो ऐसी में सारे जो लोग उसकी आवाज़ से बहुत सुनते हैं तो अपनी थकन भूल जाते हैं। इसी तरह से ककू की जो आवाज़ है वो काफ़ी श्रिल और बहुत एक्साइटेड और बहुत तेज़ है और मीठी भी है। तो ऐसी बर्ड जो स्प्रिंग टाइम में स्कॉटलैंड में जब ये आवाज़ इसकी आती है तो पूरे एटमॉस्फेयर में एक खूबसूरती सी फैल जाती है उसकी आवाज़ के साथ ही। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स की कंपैरिजन उस लड़की की आवाज़ से की गई है और इस तरह से हमें एक आइडिया होता है कि एक आम मामूली गर्ल जो उस वक्त गा रही थी, उसकी आवाज़ की खूबसूरती इतनी खूबसूरत तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने बयान की है कि वो ख़ुद ही एक लड़की जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है उस एनवायरनमेंट में, और उसकी आवाज़ की और उसके गाने की क्वालिटी को भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ीचर मिल जाता है जब विलियम वर्ड्सवर्थ उसकी तारीफ़ करते हैं। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ऐसी थीम है जो बार बार इनकी पोइम्स में हमें नज़र आती है। The Solitary Reaper is about the power of the imagination to transform common everyday events into representations of a larger reality. The unity of a man in nature. The poem dramatizes the reaper amongst the natural surroundings as she is bending on the ground and reaping the grain. The whole valley is filled with her song, echoing her sound. Her whole being and her voice is not identified as separate from nature, rather, her presence is one with nature as it is the part of it. So, as I have explained earlier, it is the same thing, that the theme is about the imagination, that how the imagination can make the everyday event extraordinary and larger than reality, larger than life thing. And then the second theme, which is usually coming in the William Wordsworth poetry, is the unity of man and nature. And here we again see the same thing, that the reaper is dramatizes or is placed in that whole environment as a part of it and not as a separate identity. She is the part of the whole environment, the nature, and this is a quality which is given by William Wordsworth to that person. Style. The stanza pattern that is used in the poem is on the ballet stanza pattern but has a magnificent sweep of rhythm and strong lyrical feeling. Each stanza is made up of 8 lines and there are 8 syllables. The second part of every stanza has a different rhythm pattern. So this is the style of the poem, that it is written in a ballet form. You can feel the definite sweep of a rhythm. Yes, there is a rhythm in the poetry. When you read it, you feel the rhythm in it. But there is a lyrical feeling that you can actually get the message in 1 or 2 lines afterward, where he puts forward that questions or where he used exclamation marks. So here while writing the stanza, he makes it sure that the lyrical quality of the poem is remarkably comes forth with the rhythm of the poetry. As you know that the ballets are actually written to tell long stories or long events in a very musical manner. So yes, there is a rhythm and in the poetry. Language. The language of the poem is very simple. Even an ordinary reader can understand it well. He has selected the words which are commonly used, but they are full of emotions and imagination. As I've explained it earlier in an introduction, that language which William Wordsworth chooses is always the common everyday language which can be easily understood, but at the same time his language is full of emotions and it actually create a very good picture in your mind because it is full of imagination. सो यहाँ पे ये बताते हैं कि सॉलिटरी रीपर की जो थीम है, एक तो पहली थीम ये है कि ये इमेजिनेशन है इसकी थीम, कि इमेजिनेशन से एक आम सी चीज़ को आप कितना
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बता सकते हैं, उसको लार्जर देन रियलिटी और लाइफ का पिक्चर दे सकते हैं। ये काम हो सकता है एक अच्छी पोइट का या ऐसे जहन का जो जिसकी इमेजिनेशन बहुत वास्ट हो। और यहाँ पे हमने देखा कि सॉलिटरी रीपर की आवाज़ को और उसकी पहचान को खूबसूरती देने के लिए उस विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू बर्ड्स की एग्जांपल इस्तेमाल की कि जो दुनिया में बहुत मशहूर हैं अपनी आवाज़ के लिए। द यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर इज़ अनदर रिकरेंट थीम इन द पोएम, यानी कि बार बार विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें ये थीम ज़रूर मिलती है कि इंसान और इंसान का ताल्लुक़ नेचर से, यानी कि दोनों को वो जोड़ते हैं कि ये इंसान जो है वो नेचर का पार्ट ही है एक तरह से। तो यहाँ पे भी हमें यही नज़र आता है कि रीपिंग यानी कि जो लड़की वो काम कर रही थी उस वक्त वो एक नॉर्मल सी एक्टिविटी थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये पूरे माहौल में एक उसका हिस्सा थी, बन गई थी। बल्कि उसकी अपनी कोई अपनी अलग से वो नहीं बताते कि वो लड़की इस तरह से खूबसूरत थी या इस तरह की इसकी आइडेंटिटी थी, ये वो इस चीज़ के ऊपर नहीं जाते, बल्कि वो कहते हैं कि उस माहौल में वो उसकी आवाज़, उसकी प्रेजेंस उसका एक जैसे कि पार्ट बन गई थी और वो हिस्सा थी उस नेचर का, उस एनवायरनमेंट का, उस सीन का। तो उस तरह से वो उसको अप्रिशिएट करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ को खूबसूरती से बयान करने से वो एक आम सी चीज़ बहुत ख़ास बन जाती है। यहाँ पे स्टैंजा पैटर्न जो है वो बैले के स्टाइल में है। यहाँ पे एक रिदम आपको नज़र आता है पोएम में, जो एक फ़्लो है। आप जब पढ़ते हैं तो देयर इज़ अ डेफिनेट फ़्लो, आप कहीं ब्रेक्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक लिरिकल क्वालिटी, एक फीलिंग स्ट्रॉन्ग आपको हर स्टैंजा में नज़र आती है कि जहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं और या एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं, वहाँ पे उनके जज्बात का पूरा इज़हार होता है। तो यहाँ पे पोइट्री में रिदम है और आपको एक फ़ीलिंग मिलती है कि इमोशनल स्ट्रेन मिलता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने डाला है अपनी पोएम में। लैंग्वेज जो है वो बहुत इतनी सिंपल है जितनी कि जैसे आपकी आम लैंग्वेज होती है, डेली लैंग्वेज होती है, और इसीलिए बहुत क्लियरली हमें ये पोएम समझ में आ जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन अंडरस्टैंड दैट even in the common language there is a lot of emotion involved and imagination involved, which William Wordsworth has actually put it in the poem to make us feel the scene which actually happened over there and which he actually experienced. He wants the readers to experience the same feeling and the imagination, the emotion of the poet, or the what actually happened on that day. So this is the whole poem, and this is the whole description and the critical analysis. This is for today. Thank you.